The BJP, meanwhile, has flayed Rahul Gandhi for his anti-India narrative, accusing him of acting like Pakistani Army Chief Asim Munir. In fact, BJP netas have also termed him New Age Mir Jafar, claiming he's trying to break India from within. That's the latest update coming in over the comments made by Rahul Gandhi first and then Mallikarjun Kharge. We have a scathing attack coming in from the Bharatiya Janata Party. BJP stepping up attack on the Congress Party. BJP netas are saying Rahul Gandhi has become Pakistan poster boy, and on the other hand, calling Operation Sindoor a small war is equal to betrayal is the view of the BJP. Let's listen in. 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है। उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं आप। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी, आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। Let's now go across to my colleague Imran joining us on the broadcast for more on this. Imran, politics as expected has now started. In fact, it is being escalated as well. After Rahul Gandhi, we have these kind of remarks coming in from Mallikarjun Kharge, the Congress president too. Okay, we'll try and reconnect with Imran in just a bit, but that's the latest update coming in. A war of words, viewers, in fact, that has started on what Rahul Gandhi first had to say and what Mallikarjun Kharge, the Congress president, had to say today. In fact, Congress President Mallikarjun Kharge termed Operation Sindoor a small war, slamming the centre for failing to ensure adequate security arrangements for the 26 tourists who were killed on April 22 in Pahalgam attack. So BJP has now reacted. We just heard the reaction coming in from BJP's Sambit Patra as well.